बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। इस सत्र का हमारा विषय है भारत की अवधारणा, आइडिया ऑफ भारत। और भारत शब्द के साथ और भारत शब्द को लेकर सबकी अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, लेकिन एक जो व्यापक दृष्टि है भारत को लेकर, भारतीय होने को लेकर, वो गौरव से भरा हुआ है और हम सबके लिए उस अनुभूति का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन उसको और गहनता के साथ अगर हम समझ सकें तो और भी बेहतर होगा। और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं। इस सत्र में की अध्यक्षता, ये भी सौभाग्य की बात है कि प्रख्यात लेखक, रंगकर्मी और शिक्षाविद और वर्तमान में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी IGNCA के जो सदस्य सचिव हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद जी, वो हम सबके साथ हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगे और आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका हम इस अवसर पर वंदन, अभिनंदन और स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ इस सत्र में हमारे साथ होंगे जानवी शर्मा जी, जो कि कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं और वर्तमान में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थी। उनको आमंत्रित करता हूं मंच पर। ई.एल श्रीनिवास जी हैदराबाद से पधारे हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के हेड हैं। लेखन के क्षेत्र में भी आपका लगातार योगदान है। और कोलकाता से पधारे कवि और उपन्यासकार, गीतकार मृत्युंजय सिंह जी, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सईद अंसारी जो पत्रकार और न्यूज एंकर हैं, वे भी कुछ देर में हम सबके साथ होंगे। तो एक बार सबके लिए, इनके लिए करतल ध्वनि और उस रूप में इन सबका वंदन, अभिनंदन और स्वागत। निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जोशी जी से अनुमति लेकर इसका शुभारंभ हम करेंगे। और इसकी शुरुआत में पहले वक्ता के रूप में आपके समक्ष में आमंत्रित करने जा रहा हूं जानवी शर्मा जी को। Janhwij Sharma ji is a conservation architect by training and is currently the Additional Director General Conservation and World Heritage at Archaeological Survey of India. He took initiatives in the formulation of national policy for the conservation of protected monuments, archaeological sites and remains, which was adopted by the Government of India in 2014, ladies and gentlemen. He is working for the preparation of conservation manual and has a number of publications to his credit that includes a book, Architectural Heritage Ladakh. He has done extensive architectural documentation of monasteries in Ladakh and Zanskar. Mr. Sharma has lectured extensively on conservation and World Heritage matters across India and abroad. तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी जानवी शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आज के इस सत्र में अपने वक्तव्य के लिए पधारें और उन्हीं के वक्तव्य के साथ इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। Thank you very much. I didn't expect that I would be the first speaker. Sachchidanand Sahaji, the chair of this session, my fellow panelists, the ladies and gentlemen who are present here. First of all, I would like to thank the Sahitya Akademi for inviting me over this for this festival of light letters, for this panel discussion, which I also feel is a very important topic. And I really hope that I'm able to contribute an alphabet or two to this festival. This concept, the idea of Bharat, I think is quite interesting in terms of its manifestation and the phrase of Bharat, because it allows us a sense of identity and our own sense of perspective. And I think this is one great idea. Now, to talk about the idea, it has several manifestations. You can talk about anything under the banner of this concept. We could look at it from the point of view of philosophical, the conceptual, the various schools of thoughts, the ideas that have traveled across Asia, various intangible traditions, and our intangible heritage. And if you
you all, I'm sure you will be familiar that we have 15 of such which have been identified as UNESCO's intangible heritage. And of course, the manifestations of all this in form of the tangible remains. And therefore, working with the Archaeological Survey of India, that I had the conservation and the World Heritage, verticals of this organization. Of course, I would focus my points related to the tangible remains. So basically, what we are doing is we're essentially looking back in time in history to get a sense of greater and the glorious Bharat. And there are several questions that emanate from it. The question is whether the idea is only about the past reflections, or that does it have a future dimension as well? Or if I may put it in another way, as we stand at this present moment with the ability to look back in time and learn and absorb and sort of celebrate our history, does it also help us navigate into our future as a cultural society or as a nation as a whole? Can the past help us connect with our future and help us expand our cultural or intellectual footprint? Or can we see or manifest Bharat outside Bharat and help us reestablish our connect through the past tangible or intangible remains? So there's many questions that at least popped up in my mind. I thought I'll sort of share it here. Very quickly, I'm sure all of you would be familiar about Archaeological Survey of India. I don't need to give you the details of that, but just to give you some snapshots. That it was established in 1861 makes it a 164-year-old organization. And I'm sure you would agree that there aren't many such organizations in the world with a mandate to preserve, their respective countries' heritage as ASI is for India. So that's one thing, and it started with the survey, but then its mandate over the time increased many. As we speak, we have 1,698 protected monuments, archaeological sites, and remains, of which there are 26 World Heritage sites. World Heritage properties, we call it technically speaking. And together, these 26 World Heritage properties constitute a little over 300 monuments. So about 8% of those size monuments actually are the World Heritage properties. And as of now, we have a vast extension, a vast sort of footprint or network of our field of our survey branches. We have a dedicated Institute of Archaeology as well. Our mandate, I would say, is fivefold mandate. One is, of course, as the name suggests, that there is a continuously evolving archaeological narrative. And that's something that we are doing year after year after year. Conservation of monuments for posterity, the vertical important mandate of the organization. Of late, because of increased tourism, that how we can provide authentic experience to visitors, or monuments can become a centerpiece of education, and how we are helping other countries preserve their heritage and extend our, or demonstrate the soft power. In fact, this is something this conflict between the ASI and the NCA. The contributions that this organization has made, I think I would list 2 or 3 really critical ones that, out of the number of contributions that in 4 years. One is, of course, the decipherment of a script where ASI played a stellar role through the excavations and discovery of sites that we have been able to push our history way back to 3000 BC or even earlier for that matter. So the major contribution goes with the discovery of the Harappan with sites that we have, and one of them is also the World Heritage properties. Of course, conservation is a continuous exercise that we do. I also feel that the Lion capital that was discovered during the 1907 excavation at Sarnath, which gave our country our national emblem, is also one of the important discoveries. Now, as I said, that we have 2,698 monuments. There is a huge variety that we may have, from north to south, from west to east. You look at these sites. You have the subterranean structures, the stepwells like Rani Ki Bagh. You have the cave structures, Elephanta caves, and there are many such cave sites that we have. And then we have monuments of different types. They could be forts, they could be the religious structures, they could be palaces. So there is a huge variety of monuments that are there with us, and they also reflect
different materials and different construction techniques that we work with. Excuse me. If you're in Ladakh, you're working with mud. If you're in Himachal, you're working with stone and wood. If you go to parts of central west of India, they're looking at stone of different types. If you come to Deccan, then we have the Deccan trap. You go south, we have, so there is a huge variety of materials, a huge variety of construction techniques, and also influences that have come from outside. Especially during the last 1,000 or 1,100 years, there are various influences that have come from outside and assimilated. So the monuments are reflecting that as well. And all these monuments are nationally important monuments, all 3698 of them, and they are in a sense exemplars of our past civilization and a past culture, art and architecture history. So, and I'm sure I don't want to go into the details that we have 2 acts of parliament that we are the one for. Now, as far as the concept, I think when I talked about Bharat outside Bharat, that we are also helping certain countries outside India. Noticeably, at the moment, our work is happening in Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, and Maldives, where we are helping them preserve their iconic heritage. And interestingly, all these monuments that we are helping them preserve have got a very distinct influence of India's culture, India's art and architecture. And we're going to start our work in Mongolia and Uzbekistan. In Uzbekistan, in fact, there is a 2nd century CE Buddhist site that we will be helping them explore. We also launched Project Awesome, which was launched way back in 2014, and this was the project which actually was launched during the 38th session of the World Heritage Committee meeting, wherein the intention of this project was to rekindle our cultural contacts along the countries of the Indian Ocean Rim. There are 39 countries that have been identified, spanning from East Africa, east part of Africa, to West Asia, to South Asia, to Southeast Asia, where there is a distinct, I would say, Bharat's footprint that can be seen. And this the contact has actually spanned nearly 4,500 years. We find the Harappan seals, which are from Oman. So what we are doing is we are looking at this entire region with as a separate way, and we are working out certain transnational proposals for World Heritage nomination, in which we are working with some of these countries. And herein, IGNCA, I must point out, is the actual partner for this entire exercise, while AID's role remains in preparation of these transnational nomination proposals involving these countries or some of these countries in the Indian Ocean region. So, because you've pointed me out that I have only 5 or 10 minutes to speak, so I think what we are, I would like to sum up at this juncture that through continuous exploration on discovering of new sites or preservation of monuments, more and more, or decipherment of ancient scripts, that we are exerting in the soft power through conservation, through World Heritage, and it is our endeavor to present this idea of the glory of Bharat, which is manifest through its tangible remains. And I think I would like to end up by saying that the past is not merely a foreign country, but it is our own homeland that has extended into the horizons of time, backwards as well as forwards. And the monuments are, and from that point of view, are at an interesting crossroads or inflection point that may give Bharat a unique identity as well as an engagement with the within the extended geographic terrain or the greater Bharat. I think with these opening remarks, let's conclude. Thank you. थैंक यू वेरी मच जानवी शर्मा जी। ये सच है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट से हमारी जो टेंजिबल है, इंटेंजिबल हेरिटेज भी है, जिसकी व्यापकता भारत की भौगोलिक सीमाओं से भी बाहर है। तो अगर हम भारत को लेकर अपनी अवधारणा बनाते हैं, तो उसमें जो एक मजबूत आधार जिसका बनता है, वो इन्हीं साइट्स की वजह से और हेरिटेज की वजह से बनता है, और जिस पर हम हमेशा गर्व भी करते हैं। इस भारत की अवधारणा की इन चर्चाओं के संदर्भ में अगले वक्ता हमारे हैं ई.एल. श्रीनिवास जी।
While Srinivas is a professor of English with more than 3 decades of teaching experience, he has served as the head of the Department of English at Osmania University and is a professor in the School of Literary Studies, English and Foreign Languages University, Hyderabad. Currently, he is a pro vice chancellor at Aurora University, Hyderabad. Apart from over a dozen course books, Srinivas has also published several articles in national and international journals. He was a member of Executive Council, National Assessment and Accreditation Council, NAC, and discharged responsibilities as its chairman in charge. So आपकी करतल ध्वनि के साथ तालियों के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे Y.L. श्रीनिवास जी को for his address, his presentation on the idea of Bharat. Good afternoon to you all. I thought I would be the last speaker, but suddenly Sir has called me. Respected Chair and my member panelists and august audience. What am I going to do in next 5 or 10 minutes is to kind of make a few submissions for your consideration. I express a very strong concern about a phenomena which is prevalent in academia now, and I am going to argue how ancient Indian aesthetic theories are useful in offering a correction. And we have a right person as a chair also, and this is for his submission also. To begin with, I raise a few questions. How did Indians handle or read text, engaged with the text before the advent of colonial modernity in 19th century? What transformation has colonial modernity in 19th century has brought about to the way Indians had read the text? Today, do we have any way to recover those practices if they are effective and deploy them for the benefit of our students is the questions I have in mind. And here my hunch is that Indian aesthetic theories are effective in addressing an important concern I'm going to kind of raise. Before that, we need to understand what happened due to colonial modernity. Because of colonial modernity in 19th century, somewhere, we have come under the impact of West, and we have deeply influenced by the Western literary engagement. And most of all strands of Western literary engagement look at a text as something which need to be subjected to postmortem, or the attempt is to read a text against its grain. Reader is a hero, and the reader has a responsibility, which arrogated for himself or herself to dissect the text and to almost, to be dismissive of the text. And this has the position of even the Marxist kind of critics in 19th and 20th century. In this literary engagement of the West, there is a change in the recent past. We have two important philosophers. We have a French philosopher, Paul Ricoeur, who talks about hermeneutics of suspicion. And in the very recent past, 2015, we have Rita Helmsky, who talks about limits of critique. These two critics, they offer a radical shift because Rita Helmsky talks about post-critique, where, she in fact reverses the Western engagement with a literary text. Here, I would want to propose for your consideration whether Indian aesthetic theories are useful in any way to reverse the way we are engaging with the text. How did ancient Indians have read the text? What was the strategy of a storyteller or a dancer or a teacher in the ancient India? How exactly he or she treated text is the point. I come to the problem which I expressed in the beginning of my talk. After 1990, India witnessed rapid growth of professional colleges, engineering colleges, and then
management colleges. I come from Andhra Pradesh, where we have in every state we have an engineering college. Every mandal has one engineering college. Tamil Nadu is the same case. There is competition among private colleges, and in order to attract students, private colleges sometimes offer come up with some innovative methods. One method is the final semester of engineering program and management program. All colleges introduce soft skills program. Soft skills is inculcating decision making, critical thinking, interpersonal communication, interpersonal management. All these soft skills and values are taught to students in the final semester, not by the institution, but by a third party. Colleges engage a third party to impart these skills. The subtitle CRT, Campus Recruitment Program. Every college has this. Now, this brings us to the fundamental question. What is the fundamental question? Now, what is the implication of this engagement? That in Indian education system, in the current education system, right from LKG to PG, that the students do not gain soft skills or values, and therefore education institutions have a responsibility of inculcating these skills and values among students by a third party. In ancient India, it is highly inconceivable even to imagine that education has education was devoid of skills and values, because we thought imparting, inculcating skills and values was the primary responsibility of education. Then, when we have this problem, is there a solution? And when I come to solution, I have in mind Indian aesthetic theory. And what is the theory? During 9th century AD, Indian institutions debated on a question. What was the question? Should art have moral objective or not? Deliberating on the question, should art have moral objective or not, Indian institutions decided, thought that art should not have moral objective. If art should not have moral objective, how do we inculcate morality is a question. So unless we have objective, we can't really impart morality or inculcate morality is our notion. And when this comes from where? This comes from Aristotle, who said, the function of the purpose of art is to instruct and direct. And this we have borrowed. And we thought that art, like any other thing, must have, an objective, because capitalists invariably think in terms of result, and result is objective. And therefore, we have subscribed to this after colonial modernity, and we thought art also must have an objective, and therefore that was the case. But Indian institutions thought that if you have objective, we would not be able to inculcate morality. Art should not have objective. Art must have moral view. It need not have moral objective. It must have moral view. Then how does that happen? I just begin, this explain this proposition, you know, uh, uh, citing a shloka from Bhagavad Gita. Lord Krishna in chapter 2, shloka 50 says, Yoga Karma Sukhaushalam. What does this mean? Transcendental knowledge leads to formation of holistic experience, and this holistic experience enables a person to discharge his duties dispassionately and skillfully. Transcendental knowledge, helps a person form holistic consciousness, and this holistic consciousness enables a person discharge his duties, one dispassionately, number two skillfully. Therefore, skill, kaushalam was considered very, very important, and one must, acquire yoga. Then, what is the method of, formulating or forming holistic consciousness, and how does holistic consciousness happen? I was talking about Indian institutions using Bhava Rasa theory. Bhava Rasa theory. They have proved
that holistic consciousness happens because, in Bhava Rasa theory, what happens? Art actually transforms the fleeting emotions of the artist into enduring aesthetic experience which is remembered by audience. And this aesthetic experience finds transformation to holistic consciousness. So, uh, uh, Bhava Rasa theory of Indian aesthetics is an important tool for us to discuss, perhaps, use in the present day, in the present day time. This also would give us a clue to understand how did ancient Indians have read the text. We read this question at the beginning of the talk. How did ancient Indians read the text? Going by this theory of Indian aestheticians, they must have read the text. They did not really look at the text, as something which needs to be exploited, need to be disrupted, need to be subjected to postmortem. Perhaps, they must have had an affinity with the text. They must have had a reciprocity with the text. Where, take the example of Bhava Rasa theory. We have actor and we have audience. In this case, actor is the text, and audience are the readers, and they read this this kind of a chemistry between the text and the reader, and that chemistry would lead to inculcation of holistic consciousness, and that would perhaps would lead to inculcation of skills and values is my submission. So what does it mean? We can use courses, we can create courses based on Bhava Rasa theory in order to inculcate soft skills and values among students right from LKG to the PG, instead of handing them over to the third party corporate sectors who make a lot of money by exploiting both the students and exploiting the necessity of colleges. Now we have new education system. New education policy 2020 talks about enhancing critical thinking skills among students. I think it also talks about reorienting curriculum. So my submission is we can reorient curriculum, we can reorient the teaching learning mechanism, taking clue from Bhava Rasa theory and replicate that in the context of academia, so that we also understand, that inculcating values and inculcating skills is the primary responsibility, primary goal of education. This is my submission. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मिस्टर ई.एल श्रीनिवास जी। भारत की अवधारणा को एक डिफरेंट आयाम और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भावना थ्योरी के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, और समय में अपनी बात को रखा, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। देवी सज्जनों, भारत गांव में बसता है, ये भारत की आत्मा गांव में बसती है, और उस गांव की आत्मा को समझे बिना भारत को समझना एक बहुत अधूरे प्रयास होगा। और जिन्होंने अपनी रचनाओं में भारत को बहुत गहरे से, ग्रामीण भारत को और उस मनःस्थिति को और उन परिस्थितियों को जो भारत के गांव में बसता है और रहता है, उसको अपने रचनाओं के माध्यम से जिन्होंने अभिव्यक्त किया है सशक्त रूप में, और जो बहुमुखी सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, मृत्युंजय सिंह जी 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं, और आपके हिंदी में 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आपने कालिदास के मेघदूत का अनुवाद भी किया है, और भोजपुरी उपन्यास, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है, गंगा रतन विदेशी, इसकी रचना भी आपने की है और उसका हिंदी अनुवाद भी किया है। वो भोजपुरी में वो उपन्यास जो है वो मूलतः लिखा गया है, जिसका हिंदी में उन्होंने स्वयं उसका अनुवाद या उस पर प्रकाशित किया उसे। और द्रौपदी आपका नवीनतम दीर्घ कथा काव्य है, और एक नाटक के रूप में आपने विदेशिया की पटकथा लिखी है, और इंडोनेशिया में भारत महोत्सव में खंडिनी का मंचन भी आप कर चुके हैं। 2 भोजपुरी संगीत एल्बम भी आपके रिलीज हुए हैं। आपने वाया दार्जिलिंग, धर्म और अन्य कई फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी मृत्युंजय सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, कोलकाता से यहाँ पधारे हैं। आपके करतल ध्वनि के साथ उनको आमंत्रित करते हैं उनके वक्तव्य के लिए।
समय की सीमा हमने 10 मिनट की इसलिए रखी है ताकि चर्चा हम ऑडियंस के साथ भी कर सकें थोड़ा सा। अभी प्रत्युजय सिंह जी अपना वक्तव्य आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया, आभार साहित्य अकादमी का, जो मुझे इस योग्य माना गया कि मैं आप सबके सामने, आप सब विद्वत जन हैं यहाँ पर, और आपके सामने अपनी बात रख सकूं। मंच को प्रणाम। सबसे पहले धन्यवाद मैं जोशी जी को देता हूँ, इन्हीं की IGNCA की मदद की वजह से we were able to mount a Festival of India, especially the cultural element of that, way back in 2009-10 in Indonesia, and we had performances in 8 cities, 48 performances, and that was the IGNCA which can do it. I mean, things that are such a scale, I still feel so indebted to all the people who came from the IGNC and supported us. I would briefly reflect upon in two parts, just in 5 minutes, what do we think when we talk about Bharat. The moment the Bharat comes into our mind, we get into the antiquity, the heritage, the history. Now, when we say आपके घर में जो पूजा करते हुए पंडित मंत्र शुरू करते हैं, संकल्प कराते हैं, तो क्या कहते हैं? जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे भारतखंडे दिल्ली क्षेत्रे साहित्य अकादमी परिसरे मासोत्तमे फागुन मासे एंड सो ऑन। तो भारत जो आज का भारत है, टुडेज इंडिया इज अ पॉलिटिकल एंटिटी, इट्स अ पॉलिटिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमने बनाया है। अगर इसको हम एंटिक्विटी में जाएं तो ऑफ कोर्स वी हैव मेंशंस इन वेदास ऑफ भारत, बट भारत was a king, one king who was remembered as a Bharat. Is just a king of an area which was at the western side of the Magad Empire. So, but today the whole Magad is in India. When then there is a Bharat in Vishnu Puran where it mentions the Bharata as a tribe of the 10 tribes who were warring tribes. I mean, they were fighting for their domination over a particular area, and that is also a Bharatavarsha, the Bharat Khanda. We have different languages. We have Jambudvipa, as I said, Aryavarta, Bharatavarsha, Hindustan. It came to, in fact, as late as in 18th, 19th century, when we have the first map, geographical map by the Alexander Dowie and Rennell, when it came to the today also in researches and all it is referred to. There also the word Hindustan, Dostan, Hindustan, and is used. Chinese Chinese call it, Japanese call it Tenziku, Chinese call it Tianzu, and everywhere one thing is common. The Tenjiku and Tianzu also means the land of the heaven. So there was something in this particular geographical area which was unique and which was attracting a lot of people from all around. And that's why they kept on referring to this place and this land from the different names. However, description of the Adi Parva of Mahabharat is of different Bharat, who was the son of King Dushyant and Sakuntala. Their story appears in Kalidasa's Abhigyan Shakuntalam also. मैं आपको हिस्ट्री की छोटी-छोटी स्निपेट्स दे रहा हूँ so that you can relate to how the whole the idea of Bharat comes to us. Then you have, I told you that Bharat in Rig Veda in third and seventh mandala as one of the 10 tribes. The best detail is given in Vishnu Puran, apart from the Purana, other Puranas like Brahma Puran and Markandeya Puran also it has been mentioned Bharatvarsha. But it actually gives the geographical details which is given in the Vishnu Puran, which matches with the present day Indian, what we call a Bharat or India. And there's a history also that is written that Swayambhu Manu, that is the first man, how he gives the land to his son Priyabrat and divided 7 islands or continents among 7 sons. The first son, Agni becomes the lord of Jambudvipa, one of the territories. And he gives it to the Agni, gave his part to his son Nabhi, and Nabhi to Rishabh. And then Rishabh's son, Bharat, becomes
this thing. This is how it comes to our memory. And we have other mentions in Amar Kosa of Amar Singh. There also there's a detail given about the Bharat. But this is just a part of antiquity. Now, when we come to the modern day, and we adopted it in constitution, and we said India, that is Bharat. Megasthenes call it Indica, that is the Greek way of telling. So everybody knows that the word India itself comes from the Sindhu, that's the Hindu. That is how we came to know about Indians or India. Anybody who was beyond Sindhu was called Hindus. So this is how the concept of Bharat comes to us. But what happens after that? After successive invasions, attacks, then the colonization happens to us. What happens as a man of literature? I start thinking about the people who lived in this piece of land. The very fact that people call this land with so many names tells us that people have been so inclusive that they did not bother about the name of the land. They were more bothered about the amity and the peace, the way they live between each other. That syncretism, that syncretic thinking was there. If it was not there, people can, as a critique, I can also quote a lot of thousands of examples where we can quote that there has been strains and stresses and fights and quarrels and devastations and everything. Which civilization does not have that? Every civilization has that. And the civilization, if it does not perish or it does not get destroyed, and it keeps on after all the stress and strains, it keeps on moving forward. That is the strength of a particular civilization or a particular people of the land. Our avadharna, Meri avadharna, jo, the idea of Bharat is emanates from there. My second part is this, that it emanates from there. What is that? That India is a land which has been a house of one of the first house when the Jews were ousted from their own land. They landed up where? And why did they land in India or Bharat? Because they knew that this is a particular place where perhaps we will be accepted. Yes, they did. They were accepted, and they still are there. One of the first synagogue we have in the Goa is of the first century AD. Later, they say that one of the 10 tribes of the Jews came to this, the whole stream came to our side. Then, when we go to the inscriptions of maybe Kharvela king or maybe Ashoka, later of the Gupta, Samudra Gupta's Prashasti inscriptions and all of it is about something or other about the people and the literature. Later, when the literature, the whole repertoire of literature, when it started developing, whether it is in the southern peninsula of Sangam literature, where we had this, what a expensive and what a extensive uh, grammar which came up in the single Sangam literature as the Thirukurals, and we have that Silapadikaram and Etchitigai and Puttapattu, and these 8 anthologies and this story of Mani Mekalai. When we go through those stories, what do we find? It is not the northern part of India, or not the northeast, or northeast, or a northern northwest. It is the southern peninsula. We had the strongest navy and army and everything, and a very well set up society there. And people were living. Of course, the rules were not governing just the lands; they were governing people. So, what was that? Was connecting all of them. Bhasas, the Sanskrit, the dramas comes to us to the northern part from where? From Kerala. It was discovered in Kerala. We did not have that. Surya Siddhantika was discovered somewhere translated by Arabs and went to Spain. And some of the historians, and not Indian historians, even the Western ones, try to reflect on that Surya Siddhantika became one of the foundation of the Reformation and Renaissance in Europe. So such was the piece and repertoire of knowledge which was coming up. And how does this repertoire, how does this knowledge, the base of knowledge come up if you do not have peace?
if you do not have amity, if you do not live together well, then how will the literati write about such kind of a growth and development? There has been, and at the same time, the same literati have been pinpointing about the decay of morality, decay of values. If there is a tension somewhere, when Premchand says in one of these stories, "बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे," he was scared that somewhere our humans are getting compromised. So he was trying to forewarn, don't get compromised. You have to tell things which are, the truth has to be told. You have to come up upfront to the people that accepting your responsibility and telling if you are wrong, wrong. There's no problem in saying sorry. So that critical thinking, Mr. Y.L. Srinivas was talking about, and the critical thinking was there among the literati, and literati kept on harping on that and kept on brewing a kind of a piece of literature stored in the form of poetry, in the form of literature, where it has started reflecting the real idea of India. For me, that real idea of India comes from the successive generations of literature which has been written in all our languages. There may be some literature which I have not been able to read. Think of Subramania Bharati, who wrote Draupadi Sabatham during the freedom movement. A man knew 32 languages, including foreign languages in that time. And today we have problems when we talk to our children. The moment we say something, they have problem in learning languages. No, I mean every Indian today has 3 languages in his pocket. One is the mother tongue, other is Bolchal ki Hindi, and third is English, which has developed as a sort of the poor lingua franca for all. If nothing works, English should work in broken words or something like that. Anywhere you go. So the Subramania Bharati, when he was writing Draupadi Sabatham, who told him to write about the freedom movement or worry about the values and the responsibilities of citizens? It is the literati. It is the literati who thinks about it. They are the thinking people. They think about it and they come up with the things which we need to inculcate. Today in our education system, with the new NEP and everywhere, the stress has been given to the mother tongue, that the children's education should be in the mother tongue. So I don't know how much of execution has happened till now. There are problems, there are hiccups, there are hitches, but instead of all those hitches, who does not know that the basic knowledge always prospers better? The growth of knowledge happens better if you teach a child in his mother tongue. We have been, my mother tongue is Bhojpuri, and I know my teacher in village has been teaching history, mathematics, geography, science, everything in Bhojpuri. Though he used to write in Hindi and give it to us, mug it up. Now you have understood, mug it up and go and vomit in the examination hall. You will pass. So Hindi and English, we mugged it up. But where did we learn? We learned from the teachers in the mother tongue, because that the mother tongue comes very naturally to us. And so is ethnicity. I do not say at times people discard ethnicity and ethnocentricity. You see, humans, the moment we started living in families, we became feeling more insecure. The market was needed. The market has started coming up. Today we are fearful of globalization. Globalization, why should we be fearful of globalization or AI? We have demanded this. We have called upon this, all this. We have to deal with it. We have to go forward and face to face and come to a position where everything is inculcated, homogenized, indigenized, and make our own version of our own political identity, social identity, and economic identity. Nobody is going to teach us how to deal with this but us and us alone. I think I have been able to say my idea of Bharat, that Bharat in my heart stands. When I say Bharat, I also understand India. I also understand Aryavart. I also understand everything that people call about it. वो कहते हैं ना, हमारे दीवार पर थोड़ी काई क्या लगी,
दुनिया उसको खंडहर बनाने पे तुल गई। ये थोड़ी सी काई है, उसको तो हम उठा लेंगे यार, कि इतनी क्या आफत आ गई है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू। बहुत आभार रणजीत सिंह का। भारत की अवधारणा को लेकर जो व्यापक एक दृष्टि उनके वक्तव्य के माध्यम से हम सबको समझ में आई है। मैं इस सत्र के अध्यक्ष की अनुमति के साथ कुछ चंद सवाल एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स की बजाय, क्योंकि समय की बहुत सीमा है, कम समय है और उसके बाद अध्यक्षीय संबोधन भी हम सुनेंगे। इसलिए मैं इनवाइट करता हूँ आपकी तरफ से संक्षिप्त सवाल अगर आपके कोई हों या कुछ आप पूछना चाहते हैं हमारे पैनलिस्ट से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। We have just 5-6 minutes for that. प्लीज आप किससे पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा, चेयर डिसाइड कर देंगे। प्रोफेसर देयर और बाय प्रोफेशन में टेलीकॉम और स्पेस एप्लीकेशन फील्ड से आता हूं। सर, हर एक कालखंड में जो आपने व्याख्या की है, चाहे फर्स्ट केडी से सिविलाइजेशनल नेशन की है, आज के कालखंड की है, जैसे सर ने बोला है एनईपी, तो सर क्या हर एक कालखंड में सिर्फ हमारा एक ही मकसद रहा है कि कुछ कैपिटल डेवलपमेंट किस तरीके का होना चाहिए? मनुष्य, कोई भी व्यवस्था सिस्टम मनुष्य से जब डील करेगी तो मनुष्य के लिए ही तो होगी। आदमी अगर कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल तो मेन कैपिटल है हमारा, बाकी चीजें तो टर्शियरी, सेकेंडरी या टर्शियरी हैं। इफ कैन if we can invest and produce the best of the human capital, we are protecting everything. Our values are right, our vision is correct, our path is right, the path chosen is right, and the person who is walking on that is right. We are going to reach at the right place. हमारा गंतव्य भी अच्छा ही होगा, खराब तो नहीं हो सकता। That's my लेकिन अब भारत की जो अवधारणा पेश की जा रही है और अवधारणा पेश करने वाले लोग, विशेषकर आप सब लोग जो शासन में है और भी लोग हैं, वो कुछ तत्वों को नहीं बता रहे कि इस भारत की अवधारणा के पीछे पीछे ये तत्व रहेंगे। तो हमारा डिलेमा ऑफ गेस्ट जो वो बहुत बड़ा है, वो ये है कि हम जब यहाँ पे मुगल आए तो मुगल के हिसाब से बात करने लगे, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की बात अभी तक नहीं भूले। ये हमारा जो डिलेमा है, जो नॉस्टैल्जिया है, तो हमारे घर में या तो चोर बन पाए या आतंककारी बन पाए, हमने उन्हीं की संस्कृति को अपना लिया और इतनी हद तक अपना लिया है इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि किसी भी देश में, क्योंकि हमारी जो ये फ्री रेंज है ना, लोग जो समझ रहे हैं या हम जिस तरह से दुनिया में पेश कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनकी परिवीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। एक मिनट, सवाल आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये पूछना चाहते हैं कि जो भारत की अवधारणा है उसके कौन कौन से घटक हैं जिस पर आप भारत बनाना चाहते हैं, रहेगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आई। मुझे लगता है कि बहुत सारे पक्षों को लेकर आपके सामने बात रखी गई है। Yeah, it's on. In fact, to address this specific question, we must get the Western way of looking at a text, and we must adopt the Indian way. So the whole purpose of my talk, perhaps I failed to communicate properly, but that was the whole idea, that we must replicate the ancient Indian systems in the education system so that students get benefited. आपके प्रश्न जो था उसमें एक एलिमेंट जो था बहुत, जिसको घातक आप बता रहे थे, घटक नहीं, घटक आप पूछ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा, हाँ, आप एक बात समझने की कोशिश करें। आज आप केवल बोल रहे हैं मुस्लिम इन्वेडर्स और अंग्रेज, हम तो
सीथो पर शक कुषाण गुण कौन थे? उनको हमारे यहाँ के सिस्टम में कैसे लोगों ने राजा एक्सेप्ट कर लिया और उसकी प्रजा होकर रहे? कैसे अबुल फजल की किताब आप पढ़ेंगे अकबरनामा तो आपको पता चलेगा कि कैसे इस यमुना के किनारे उलेमा ने कंप्लेन किया उनको कि ये हिंदू लोग जो है सब काफिर है, ये ढोल वोल बजाते मजीरे जाते हैं, इसको बंद करवाया जाए। और अकबर ने कहा कि तुम्हारी मस्जिद में, तुम्हारे अजान में, तुम्हारे सिजदा, तुम्हारी पूजा में कोई दिक्कत होती है भाई? तो नहीं नहीं हमारे नहीं होती, लेकिन वो करते क्यों है? तो करने दो ना उनको। तो दिस इज, अगर जब तक हम लोग बात करें ये सिंक्रेटिज्म जब तक नहीं आएगा, हमें हमारे यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट्स है। आपके यहाँ 3 तरह के ट्राइब्स है, आपके जितने भी नॉर्थ ईस्ट है ये सब हमारी तिब्बतो बर्मीज टाइप है। आपको पता है कि उस इलाके में केवल मणिपुर में, किरण भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मणिपुर में 26 से 30 भाषाएं बोली जाती है तरीके की। और आप इधर असम में 26 भाषाएं बोली जाती हैं और एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को देखना नहीं चाहता, सर काटने को आमादा रहता है। तो वहां पर गवर्नेंस करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग ही लगेगी कि आप जाके परीक्षा करके और तुरंत कह के मैं इसको मानता हूँ इसको नहीं मानता। हमारे यहाँ बाइनरीज चली नहीं, आज तक नहीं चली। 16 जनपद जो थे सेंचुरी बीसी में एस्टेब्लिश, उनपे भी बाइनरीज नहीं चली। हमने हमेशा काम किया ऐसे ही, बातचीत से काम किया। ठीक है, आज भी देखिए बातचीत चल रही है, यहाँ बैठे हैं एक कवि है और इनकी कवि की पीड़ा मैं समझता हूँ, मणिपुर की बैठे हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि नहीं वो एक दिन की बात नहीं है, समय तो लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है अब यहाँ से बात जो आनी थी जितनी आ चुकी हैं, और ये समय है जब इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से हम निवेदन करें आप सबकी तरफ से। आप सब जानते हैं आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी प्रख्यात लेखक, कवि, अभिनेता और शिक्षाविद के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव हैं और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति के रूप में भी आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आपकी कुछ नवीनतम कृतियों में सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियां, पल भर की पहचान, इस तरह की रचनाएं शामिल हैं। आपने प्रकाशन विभाग के लिए कई प्रतिष्ठित पुस्तकों का संपादन भी किया है, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण जो हैं वो शामिल हैं। आपको संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। समय की कोई सीमा ना रखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए पधारें। अस्तु मा सद्गमय, सो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री मृत्युंजय जी, आदरणीय श्री श्रीनिवास जी, आदरणीय श्री जाह्नवीज जी और सत्र का संचालन कर रहे आदरणीय जैनेन्द्र जी और जिन्होंने सबने धैर्य पूर्वक इस सत्र को सुना, ऐसे सभी श्रोतागण। विषय बहुत व्यापक है और इसकी अलग अलग व्याख्याएं करते हुए हमारे तीनों विद्वान वक्ताओं ने अपनी बातें कही हैं। और बहुत रोचक बात यह है कि आपको इस विषय के 3 अलग अलग रंग देखने को मिले। बहुत कम होता है जहां पर रिपीटेशन नहीं होता, पर यहाँ बहुत रोचक बात हुई कि तीनों वक्ताओं ने भारत की दृष्टि को बहुत अलग तरीके से देखा है। आमतौर पर अध्यक्ष का काम होता है कि वो वक्ताओं की बात को जोड़ते हुए अपनी बात कहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये तीनों वक्तव्य अपने आप में इतने परिपूर्ण थे, अपने आप में इतने ज्यादा सुगठित थे कि उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं हो। तो मुझे लगता है कि एक वक्ता के तौर पर जो कुछ मैं तैयार करके आया था, क्योंकि आपको तो मालूम है मैं भी एक स्थानापन्न अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए मैं जो एक वक्ता के तौर पर अपनी बात कहना चाहता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। जब भारत शब्द मेरे मन में आता है, भारत शब्द को जब हम सामने देखते हैं तो क्या भाव मेरे मन में उठते हैं, इस बात को सोचते हुए मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। दरअसल भारत की व्याप्ति क्या भूगोल में है, इसको सोचना पड़ेगा। क्या भारत सिर्फ एक भूगोल है जो कुछ सीमाओं में, कुछ परिधि में बंधा हुआ है, या फिर भारत एक राजनीतिक अस्मिता है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है जो एक देश के रूप में आपके सामने आती है?
या फिर भारत एक समाज है जिसका अपना एक समाज शास्त्र है, वो आपके रूप में आता है, या फिर भारत एक इतिहास है जिसकी अपनी कहीं व्याख्याएं हैं, जिसके अपने कहीं संदर्भ हैं, वो हमारे रूप में आता है। लेकिन इन सब के परे जाकर अगर हम देखें तो भारत के रूप में हमारे मन में जो बात सबसे पहले उठती है वो है भाव। भारत क्या है? भारत मुझे लगता है एक भावनात्मक इकाई है जो भाव से उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्र की अवधारणा हुई। राष्ट्र की अवधारणा हुई तो राष्ट्र का अनुवाद नेशन नहीं हुआ, राष्ट्र का अनुवाद कंट्री नहीं हुआ। जैसे हिंदी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी में कोई अनुवाद नहीं होता। उदाहरण के लिए धर्म है, उदाहरण के लिए संस्कार है। वैसे ही मुझे लगता है कि जो राष्ट्र की अवधारणा है उसका भी कहीं कोई अनुवाद नहीं होता, क्योंकि राष्ट्र जो है वो एक जीवंत, अपने आप में एक जीवंत एंटिटी है, एक जीवंत वस्तु है, एक जीवंत पूरी की पूरी व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को देखने के लिए हम सबको भी राष्ट्र के रूप में उसके साथ उसी तरह से भावात्मक रूप से संलग्न होना पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन में एक शब्द का उल्लेख किया है, चिति, और उन्होंने इस चिति शब्द का उल्लेख राष्ट्र के लिए किया है। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्र की चिति को संबोधित करना चाहता हूं। हम में से बहुत लोगों को अपनी व्यक्ति के तौर पर ही चिति का भान नहीं है, माफ कीजिएगा, पर हम सब लोग जीवन की उधेड़-बुन में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हमें अपनी चिति का भान नहीं है। वहां दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे विद्वान राष्ट्र की चिति की बात। तो राष्ट्र की चिति क्या है? वो राष्ट्र का स्पंदन क्या है? वो राष्ट्र का मन क्या है? वो राष्ट्र का भाव क्या है? उसमें से भारत उपजता है। मेरा बेटा जब चौथी क्लास में था तो स्कूल से जब लौट के आता था तो एक दिन मैंने उससे कहा कि आज तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? उसने कहा हमारे यहाँ आज प्रार्थना हुई। और उसके बाद एक प्रश्न उसने किया। उसने कहा कि जब स्कूल खत्म होता है और जनगण मन बजता है तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? मेरे हाथ पांव कांपने क्यों लगते हैं? मैंने सोचा कि उससे कहीं ज्यादा उम्र का मैं आज भी जब जनगण मन बनता बजता है तो मेरे हृदय में एक ऐसा स्पंदन क्यों उत्पन्न होता है? मेरी आंखों में से आंसू क्यों आते हैं? मेरा सीना क्यों भर आता है? गला क्यों भर आता है? ये भाव क्या है? ये भाव भारत है। ये भाव इसलिए अगर आप भारत की अस्मिता की बात करें, आइडिया की बात करें, भारत के बोध की बात करें, भारत की अवधारणा की बात करें, तो मुझे लगता है कि भाव से ही भारत उत्पन्न होता है। इसलिए उसकी भौगोलिक व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सुदूर इंडोनेशिया में भी कहीं ना कोई कोई बैठा होगा जो भारत के इस भाव को पकड़ता होगा। कोई अफगानिस्तान में भी बैठा होगा जो भारत के इस भाव को पकड़ता होगा। कोई ईरान में भी बैठा होगा जो भारत के इस भाव को पकड़ता होगा, क्योंकि वो भारत की सांस्कृतिक व्याप्ति, वो भारत की भावनात्मक व्याप्ति। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को अगर एक शब्द में अभिव्यक्त करना है तो वो शब्द है आस्था। आस्था यानी 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था, वो उस भाव में आस्था है। वो किसी धर्म, किसी मत, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी भौगोलिक परिदृश्य, किसी भाषा के जंजाल में नहीं उपजी है। वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र रूप से इस भावनात्मक इकाई के साथ अपने आप को जोड़ती है, उस आस्था की बात। और इसलिए वो आस्था है जो भारत को भारत बनाती है। वो आस्था है जो बाजार से खरीदी गई मिठाई को मंदिर से लौटने पर प्रसाद बना देती है। ये वो आस्था है
जो नल से भरे गए पानी को देवालय में जाने से तीर्थ बना देती है, चरणामृत बना देती है, ये वो आस्था है। और इस आस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न नहीं है, क्योंकि सभी उस आस्था के महासागर में एक साथ परस्पर सहभागी है, सहयात्री हैं, सबका भाव समान है, सबका स्तर समान है, सबका विचार समान है, वो भारत है। इसलिए जब भारत की व्याख्या हुई तो ऋग्वेद में कहा गया यत्र भवत्येक विश्व एक नीडम। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस परिधि में जो है वो सब हैं, इसलिए मैंने नहीं कहा कि जो भारत में रहते हैं वो मेरा कुटुंब है, मैंने पूरी वसुधा को अपना कुटुंब बना लिया। भारत का वो भाव था, भारत का वो भाव था कि मैंने किसी एक व्यक्ति के मंगल की कामना नहीं की, मेरे अपने परिवार के मंगल की कामना नहीं की, मैंने अपने इष्ट मित्रों के मंगल की कामना नहीं की। मैंने कहा सर्वेपि भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जो कोई भी है वो सुखी रहे, जो कोई भी है वो निरोगी रहे। अगर वो सुखी रहेंगे, वो निरोगी रहेंगे, तो मेरा भाव प्रबल होगा, मेरी आत्मा प्रबल होगी। वो भारत, वो भारत। तो हमें तो भारत को देखना है, तो हमें उन अवधारणाओं में देखना है। इतिहास अपनी जगह है, इतिहास की घटनाएं अपनी जगह हैं, इतिहास की घटनाओं को कभी नकार नहीं। भारत का वर्तमान अपनी जगह है, हम उसे भी नकार नहीं सकते। भारत का भविष्य भी अपनी जगह है, हम उसको भी नकार नहीं सकते। लेकिन हमारे पास जो है, वो है इस भारत की शाश्वत सनातन संस्कृति। तो शाश्वत सनातन संस्कृति कहती है नित्य नूतन चिर पुरातन। आप नए को अंगीकृत करते चलो और पुराने को समृद्ध करते चलो। इस तरह से जब आप आगे बढ़ते हो तो भारत बनता है। नहीं तो बताइए, इतने आक्रमण होने के बाद, इतने आतताई आने के बाद और इतनी कुटिल चालें इस देश के, इस राष्ट्र के ऊपर रची जाने के बाद दुनिया की कौन सी व्याप्ति थी जो वहां स्थिर रह सकती थी? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हाँ, बहुत सारी बातों में कई विकार आए हैं, लेकिन आप बताइए, आज से 10 दिन पहले जो समाप्त हुआ, आपने क्या देखा नहीं कि वो आस्था का महासागर है? और उस आस्था के महासागर में जहां करोड़ों लोगों ने अपनी साक्ष्य दी है, मुझे तरस आता है उन लोगों की बुद्धि पर जो इस आस्था के महासागर को आंकड़ों से तौलने की गलती करते हैं। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है जो आस्था के महासागर को व्यवस्था की कसौटी पर कसने की गलती करते हैं। मुझे दुख होता है कि जो आस्था के इस महासागर को कहीं न कहीं स्वास्थ्य और पर्यावरण के विषयों को लेकर अपने आप को उलझाने की कोशिश करते हैं। आस्था के इस महासमुद्र में कहीं किसी का कोई निमंत्रण नहीं था। आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की शाश्वत सनातन संस्कृति का प्रभाव था और भारत की जो व्याप्त आस्था है, उसका प्रभाव था, जिसके कारण ये सारा का सारा महासमुद्र वहां पर उपस्थित हुआ। अभी 2 दिन पहले मैं कहीं देख रहा था और किसी बहुत अच्छे पत्रकार ने इस बात को कहा भी है कि विश्व में कहीं 1-2 करोड़ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो विश्व के बड़े से बड़े अखबार और न्यूज़ चैनल में वो घटना फ्रंट पेज की बन जाती है। लोग उसके बारे में तारीफ के कसीदे करते हैं। भारत में ये जो घटना हुई, ऐतिहासिक अभूतपूर्व घटना हुई, तो विश्व के सारे अखबार और चैनल जिनको इसकी प्रशंसा में बात करनी चाहिए थी, उनके पास प्रशंसा के शब्द ही नहीं थे, इसलिए वो ईर्ष्या से जले भुने चले जा रहे थे। क्योंकि उन्हें कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा कोई जनसमूह हो, ऐसा कोई समुदाय, ऐसे कोई लोग जिसमें न धर्म का बंधन है, न जाति का बंधन है, संप्रदाय का बंधन है, न अमीर-गरीब का फ़र्क है और सब अपनी-अपनी दृष्टि से उस आस्था के महासागर में डूबे। तो ये भारत की आस्था है और ये भारत की अवधारणा है, ये भारत की मूल आइडिया का, भारत के मूल स्वरूप का दर्शन है। इसीलिए तो देवताओं ने कहा कि गायन्ति देवा किल गीत कानि धन्यस्तु मे भारत भूमि भागे। देवताओं को कहना पड़ा कि मेरा भी जन्म हो तो इस भारत भूमि में हो, क्योंकि यही वो भारत भूमि है
जो लोगों को तारती है, क्योंकि यहाँ पर हम व्यक्ति और देवता में फर्क नहीं करते, हम व्यक्ति को देवत्व की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति देव के समान होता है। इसलिए हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति में हम देवत्व को देखने की चेष्टा करते हैं, और फिर उसमें भी मेरे अपने का भेद नहीं करते। हम न देश की सीमा का भेद करते हैं, न उसके किसी रंग रूप की सीमा का भेद करते हैं। हमारे लिए वो सब व्यक्ति देव के समान हो जाते हैं। इतनी व्यापक दृष्टिकोण से इस भारत को देखा जाता है। तो जब हम भारत की अवधारणा की बात करें मित्रों, तो मैं सच कहता हूं कि अपने आप में भूगोल अपनी जगह शाश्वत है, क्योंकि आपने जिस विष्णु पुराण का उल्लेख किया है, उसमें ही भारत की व्याप्ति की बात कही है। और मुझे दुख होता है इस बात पे कि जब हमने इतिहास पढ़ा, हमें भी बताया गया कि भारत को एक करने में अंग्रेजों का बड़ा हाथ रहा। ये कितनी गलत बात है जो हमें सिखाई गई। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्षम तद यद भारतः भारती नाम संतति। आज से कितने हजार वर्ष पूर्व भारत की भौगोलिक सीमा या भौगोलिक परिधि को भी व्याख्या करने वाला ये श्लोक हमारे सामने उपलब्ध होने के बावजूद भी कितने वर्षों तक हमको यही पढ़ाते रहे कि भारत को एक करने में किसी और का हाथ। हमको ये भी बताते रहे कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, इसलिए भारत बहुत कई सारी व्यापक संस्कृतियों का देश है। अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो भारत बनता है। हमको ये नहीं बताया गया कि भारत में ही कहा गया एको हम बहुश्याम, मैं एक ही हूँ जो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे प्रकट होता हूँ। मेरी परंपरा थोड़ी सी अलग हो सकती है, मेरी पद्धति थोड़ी सी अलग हो सकती है, मेरे काम करने का ढंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, मेरी वेशभूषा थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन उन सब के बीच में जो भाव है, वो जो एकत्व का भाव है, वो दरअसल भारत भाव है। और उसी भारत भाव के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। उसी भारत भाव को खोजने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। कोई उत्तर से आया है, कोई दक्षिण से आया है, कोई सुदूर उत्तर पूर्व से आया है, कोई पश्चिम से आया है, लेकिन हम सब यहाँ बैठकर अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने विचार से उस भारत को देखने की चेष्टा करते हैं। और मित्रों, एक बात और बता दूं, अपने देश को अपनी दृष्टि से, अपने विचार से देखने का, सोचने का स्वातंत्र भी सिर्फ और सिर्फ ये भारत भूमि ही प्रदान करती है। विश्व का और कोई देश, कोई सभ्यता प्रदान नहीं करता। तो जिसकी इतनी व्यापक व्याप्ति हो, जिसकी इतनी व्यापक व्याख्या की जा सके, ऐसे भारत की अवधारणा को देखने वाले और उसकी साक्ष्य रखने वाले हम सब भारतवासी हैं। आने वाले वर्षों में भी यही भारत पूरे विश्व के सामने अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से पूरे विश्व का पथ आलोकित करेगा। इस भाव को लेकर हम सब यहाँ बैठे, और इसलिए जब हम सबके मन में वो भाव आता है, तभी जाकर हम सोचते हैं कि पूरे विश्व में जो चेतना फैलाने का काम है, वो हम कैसे कर सकते हैं। और वो चेतना फैलाने का काम करने का अगर सच में कोई पीड़ा उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे युवा है, जिनको सही ढंग से प्रेरित, प्रशिक्षित और संस्कारित करने की आवश्यकता। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि साहित्य अकादमी ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह सत्र रखा है। मैं नहीं जानता कि ये बात कब और कैसे कितने लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है। ये बात पहुंचेगी तो ही सही भारत पूरे विश्व के सामने और विशेषकर भारतवासियों के सामने भी आएगा। बहुत सारे हमारे ऊपर आक्रमण हुए, बहुत सारे हमारे ऊपर प्रयास हुए कि हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया जाए, हमारे विचार को छिन्न भिन्न किया जाए। तो उसके बावजूद न हमने मन में कटुता रखी, न हमने बैर का भाव रखा, फिर भी हमने समभाव रखा, फिर भी हम सबसे कहते रहे वसुधैव कुटुंबकम। आज भी जब हम शांति की प्रार्थना करते हैं, शांति मंत्र कहते हैं, तो कहते हैं ओम द्यौः शांतिरक्ष अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधयः शांति, वनस्पतयः शांति, शांतिर्विश्वे देवा शांति, शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेति शांति, शांति शांति। यानी पूरे विश्व के लिए शांति। इसमें कहीं मेरा भाव नहीं है,
मेरे अपने का भाव नहीं है। और उस भाव से अगर हम बिना किसी कटुता के, बिना किसी वैमनस्य के, बिना किसी वैर भाव के अभी भी पूरे विश्व में शांति की कल्पना करते हैं, तो ऐसी भारत भूमि को कौन बार बार शत शत बार प्रणाम नहीं करेगा, और कौन नहीं कहेगा कि जब भी ईश्वर मुझे दोबारा जन्म दो, तब इसी भारत भूमि पर दो, और लगातार और बार बार मुझे इसी भारत भूमि पर जन्म दो। तो ऐसे इस भारत की अवधारणा के बारे में हम सब यहाँ चिंतन करने बैठे, और हमारे तीनों विद्वान मित्रों ने अपने विचार रखे। आप सभी श्रुति श्रोतागणों ने भी अपने अपने विचार रखे, अपनी बात कही। मुझे जो कहना था, एक वक्ता के तौर पर, एक अध्यक्ष के तौर पर मैंने आपसे अपनी बात कही है। अंत में जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जय घोष लगाते हैं, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हृदय से आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का, उनके इस बहुत ही प्रेरक और प्रभावशाली वक्तव्य के लिए भी, और इस सत्र की अध्यक्षता के लिए भी। और साथ ही आभार व्यक्त करना चाहेंगे जानवी शर्मा जी, वायल जी और मृत्युंजय सिंह जी का, इस सत्र में वक्ता के रूप में उनकी गरिमा में उपस्थिति रही। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ इनका आभार भी, अभिनंदन भी, ऐसे प्रेरक सत्र में आपने अपनी सहभागिता निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये सूचना देते हुए कि अगला सत्र जो है हमारा 2:30 2:30 वो शुरुआत होगी, और उसमें माननीय राज्यपाल गोवा उनकी उपस्थिति होगी, और बहुत प्रसिद्ध अलग अलग क्षेत्रों की विभूतियां उनमें शामिल हैं जो यहाँ मंच पर उपस्थित होंगी। और उसका विषय होगा साहित्य और अन्य कला रूपों के बीच साझा स्थल, यानी शेयर्ड स्पेसेस बिटवीन लिटरेचर एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। और इसमें जो स्पीकर्स हमारे बीच यहाँ होंगे, जतिन दास जी हैं,